मेरे पास पेशेंट आया नॉन सिंड्रोमिक विद इन 6 मंथ्स ऑफ एज डायबिटीज। सबसे पहले मैं 6q24 जीन एब्नॉर्मलिटी चेक करूंगा। इफ इट्स पॉजिटिव इट इज ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज। इसके अंदर मैं इंसुलिन थेरेपी कंटिन्यू करूंगा अंटिल इंसुलिन रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है पेशेंट की। और पेशेंट को बस एजुकेट करना है कि एडोलेसेंट फेज में पेशेंट कैन अगेन डेवलप द डायबिटीज मेलाइटिस। Then if 6q24 gene mutation comes negative, then we'll do KCNJ11 plus ABCC8 gene mutation. If it comes positive, it could be permanent, it could be transient. So we'll start the patient on sulfonylureas. अगर patient recovered within 18 months, तो if yes, then it is transient type of neonatal diabetes. If no, then it is permanent type of neonatal diabetes. अब हमने KCNJ11 gene mutation, ABCC8 gene mutation करा, that also comes negative. तो ऐसे में मैं करूंगा insulin gene mutation. If it comes positive, again it could be permanent, it could be transient. We'll start on insulin therapy. If patient improve by within 18 months, so it is transient neonatal diabetes. If patient not improve, then it is permanent neonatal diabetes. If insulin gene mutation also comes negative, we'll do the GCK mutation. GCK mutation, if comes positive, it is suggestive of permanent neonatal diabetes. We'll continue the patient on insulin therapy. If it also comes negative, then we'll test for other rare gene associated with neonatal diabetes.